I'm back once again, your host and mentor, CA Anu Agarwal. We have come a long way, right? चैप्टर नंबर 1 to 5 उनकी इंपॉर्टेंस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. सिर्फ वही करके जाओगे तो भी 55 to 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 तो डेफिनेटली मिलेंगे. बट इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर दोज वंडरफुल 80, या मे बी आई शुड से 70 मार्क्स आउट ऑफ 80 out of 80 तो इज आस्किंग फॉर टू मच. बट गाइज 5 चैप्टर्स के अलावा सिर्फ एक ईयर चैप्टर कर लिया तो गाइज लाइफ इज सॉर्टेड. So on this note, today let us start with chapter number 7, which is national income, and I will try to shorten it up as much as possible, and I will tell you the important areas which are coming from this particular chapter. So the questions which I have found is, they have given you in 2 markers wherein you have to tell whether it is a money flow or a product flow. Then you have got a question with respect to tell us that how double counting can be avoided. Then methods of measuring national income. ये कुछ रूटीन क्वेश्चंस हैं जो आपके HSC 12th एग्जाम्स में आते हैं. सिर्फ अगर आप मुझे सुन लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, all your questions will be answered. So on this note, let's start studying, guys. So national income. Before we go through your textbook, I'll give you a very small example what national income is. आप समझिए, पहली बात, this is a measure of ये एक तरीका है. It is a measure of finding out how the people in the country are doing. राइट तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, कंज्यूम होती हैं, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज राइट को अगर हम एडअप कर लें तो हमको पता चल जाता है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. अब आप सोचोगे मैम गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करके नेशनल इनकम कैसे पता चलेगी? जब ये गुड्स बने हैं और कंज्यूम हुए हैं तो ऑब्वियसली ये किसी ना किसी की इनकम है, राइट? दैट इज द प्रोड्यूसर, और somebody has spent money to buy these goods. Yes. So if I total all these goods and services, I know that what is the total value of goods and services which are being produced in the country. Yeah, technically national income. अभी भी नहीं समझ में आ रहा? Okay, I'll try one more time. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. सोच के देखो, इकोनॉमी में कोई और नहीं है और हम लोग एक परफ्यूम बनाते हैं, राइट? तो अभी आपको अज्यूम करना है जो मैं बता रही हूँ. सो देयर इज नोबडी. नाउ लेट्स से देयर इज मिस्टर एक्स, वो गुलाब का फूल बनाते हैं. ही मेक्स रोजेस. नाउ दोज रोजेस आर बीइंग सोल्ड टू मिस्टर बी, राइट? मिस्टर बी इन रोज को क्रश करके इनसे कुछ लिक्विड बनाते हैं, एंड देन मिस्टर सी उस जो लिक्विड मिला है उससे वो परफ्यूम बनाते हैं. इमेजिन दिस इज द प्रोसेस. जस्ट इमेजिन. डोंट लुक इनटू कि मैम परफ्यूम ऐसे नहीं बनता. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. आई एम रिपीटिंग इट. इट्स एन एग्जाम्पल. नाउ मिस्टर एक्स ग्रोज these roses, right? Now उनके पास जो लैंड था उसमें उन्होंने ये रोजेस को ग्रो किया, और लेट्स से एक जो टोटल रोजेस हैं वो 100 रुपए की वर्थ के हुए, उस पर उन्होंने 10 रुपीज ऐड किया और ये 110 में उन्होंने मिस्टर बी को बेच दिया. नाउ अभी मिस्टर ए अकेले हैं, ठीक है? उनके पास उन्होंने ये रोजेस ग्रो किए, उनके ऊपर उन्होंने प्रॉफिट ऐड किया और 110 पर मिस्टर बी को बेच दिया. नाउ व्हाट डज मिस्टर ए अर्न? मिस्टर ए अर्न्स एट 10 रुपीज. मिस्टर बी के लिए वो रॉ मटेरियल है फॉर मेकिंग दैट लिक्विड, राइट? Mr. B employs certain people जिनको वो सैलरी देते हैं, who are doing the process for crushing these roses. Now the wages which Mr. B is giving to his people, वो उन workers के लिए wages है, right? और Mr. B के लिए expenditure है. Now Mr. B after paying the wages, उनके लिए expenditure हो जाता है 110, तो उनके लिए रॉ मटेरियल था, प्लस लेट्स से 80 का उन्होंने वेजेस पे किया. अभी कितना हो गया? 190. अब इस 190 में उन्होंने 50 रुपीज ऐड किया अपना प्रॉफिट और मिस्टर सी को बेच दिया. कितने पे? 240 पे. अभी व्हाट इज द इनकम विच इज जनरेटेड? इट इज प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर, दैट इज मिस्टर बी, एंड वेजेस टू द वर्कर्स, राइट?
और ये जो 240 रुपीज का लिक्विड मिस्टर सी ने खरीदा है, ये बेसिकली क्या है, ये रॉ मटेरियल है फॉर मिस्टर सी टू मेक परफ्यूम्स। सिमिलरली मिस्टर सी ने कोई जगह किराए पे ली हुई है, उस जगह का वो रेंट पे करते हैं, राइट। ही हैज एम्प्लॉयड पीपल, उनको वो वेजेस पे करते हैं, एंड देन आफ्टर मेकिंग दिस पर्टिकुलर परफ्यूम, दिस रॉ मटेरियल से वो परफ्यूम बनाते हैं, ही इज सेलिंग इट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। नाउ मिस्टर सी ने क्या खर्चे किए, उन्होंने वो इंटरेस्ट पे किया, रेंट पे किया, वेजेस पे करी, सो दैट लेट्स से द कॉस्ट इज 350, फिर उन्होंने उसमें 50 रुपीज का प्रॉफिट ऐड किया और 400 में कंज्यूमर को बेच दिया। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं, मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, अगर मैं और से दिस इज द ओनली प्रोडक्ट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, देन व्हाट इज द income produced in that country? Now let's say these are the only people in the country, this is the only product produced in the country, then what is the income of this country? It is 400, right? ये 400 में सबकी इनकम आ गई, उस 350 पर 50 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करके मिस्टर सी ने बेचा, सो 50 इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय मिस्टर सी। मिस्टर सी ने 240 में मिस्टर बी से लिया था, मिस्टर बी ने उसमें जितने खर्चे किए थे, जो भी प्रॉफिट ऐड किया था वो उसमें इंक्लूडेड है। मिस्टर सी ने जिस भी वर्कर को पे किया, जो भी रेंट पे किया, जो भी इंटरेस्ट पे किया, वो उस 240 के बाद जो हमने खर्चे ऐड किए उसमें इंक्लूडेड है। इन अ नटशेल 400 rupees takes care of the profit earned by Mr. A, the profit earned by Mr. B, the profit earned by Mr. C. It takes care of the wages earned by the workers working with Mr. B, workers working with Mr. C. It takes care of the rent and the interest paid by Mr. C. और आप इसका मूवमेंट देखिए कैसा है, लोग, हाउस होल्ड, जो पब्लिक है, जो पीपल है, दे आर ओनली द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर द वंस ओनली हु आर द पीपल हु आर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग, and they are the only people who are consuming. Am I very sound and clear? So on a very simple note, national income means whatever goods and services which are being produced in the economy, consumed in the economy, if we add up all those, we get national income. On this note, let's look at the text. I hope after this everybody has understood कि क्यों सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर लें तो हमको नेशनल इनकम की वैल्यू मिल जाएगी। Guys, from examination point of view, you may just remember 2-3 lines. National income of a country is expressed in terms of money. Total income of the nation is called national income. You may remember these 2 lines. You may not remember the whole definition. So the total income earned by the nation is national income. National income is the flow of goods and services produced in an economy. Just itni si line. The value of all goods and services produced in the economy, the sum total of all the goods and services produced in the economy is the national income. National income is expressed in terms of money. If you want, you will remember any one definition if you want to. If you don't want to remember, it's absolutely okay. Now guys, if there is a short question of 4 marks जो आ सकता है, that is features of national income, तो आप एक word याद रखिए हमारे लिए, FAM. अभी आप समझोगे मैं FAM क्यों बोल रही हूँ, because they are the features of national income. इसमें से FAM में F कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। हमारे FAM में, हमारे FAM की डेफिनेशन में, लेट मी पुट इट लाइक दिस, जस्ट अ सेकेंड, we have got F 3 times, right? Then I said FAM is the word which I'm asking you to remember. 2 बार A होगा and 2 बार M होगा। FAM ऐसा होता ना, FAM, family, FAM. These are the features. If you remember the word FAM, आपको features of national income आ जाएगा। अब what do you mean by this FAM? एक F है आपका, that this is a flow concept. National income is a flow concept. It's the flow of goods and services which are being produced in the economy. Second F is for the financial year. When we are calculating the national income, it is with respect to the financial year which starts from 1st April and ends on 31st of March. So one F is flow concept, the other F is for your financial year. Sorry,
The next F is for the value of only final goods, right? 3 F है. पहला F हो गया, it's a flow concept. Second F हो गया आपका that this is we measure it for a financial year. Third F हो गया आपका that we are only taking up the value of final goods and services. उसका लॉजिक क्या है? इमेजिन करिए you are taking up, okay, I'm taking up this shirt, right? If I take up, अभी मैंने आपको क्या बताया, मेरे परफ्यूम की फाइनल वैल्यू लो तो ऑटोमेटिकली जितने उसके अंदर जो रॉ मटेरियल की वैल्यू है या वो जो लिक्विड है हो सकता है वो अपने आप में किसी और चीज के लिए भी यूज हो सकता हो, लेकिन मैंने उस लिक्विड की वैल्यू भी इंक्लूड कर दी, उस रॉ मटेरियल की भी वैल्यू इंक्लूड कर दी, फाइनल प्रोडक्ट की भी वैल्यू इंक्लूड कर दी, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना. So we don't want to have double counting. फिर correct income नहीं calculate होगी. So if we want to do correct calculation, we should only take up the value of the final goods. We should not take up the value of raw material and intermediate good. Intermediate good means a good which comes into existence and if I remove it, process से remove करूँ तो हो सकता है वो as it is भी बेचा जा सके. But that intermediate good has gone into the production of some other good which we are calling as final good. Right, raw material वो होता है which is of course we understand what's a raw material, but students come up to me कि मैम raw material और intermediate good में क्या difference हो गया. So intermediate good अगर process से निकाल दिया जाए I can sell it separately also, but that is an intermediate good which has come into existence but it is being used in the production of the final good. तो अगर intermediate good final good की तरह बिक रहा है, ठीक है, तब तो हम वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ले ही रहे हैं ना. वी आर टेकिंग अप द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सो लॉजिकली इफ दैट इंटरमीडिएट गुड is sold as a final good, it is no more an intermediate good. But that intermediate good, when it goes into the production of the final good, I am supposed to take up the value of only the final good. I hope I am very clear. ठीक है. So 3F फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम में एक F है फ्लो कंसेप्ट, दूसरा F है फाइनेंशियल ईयर और तीसरा F है आपका वी आर ओनली टेकिंग अप द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. We are not taking up the value of raw material or intermediate goods, otherwise there is going to be double counting. So in order to avoid double counting, we are only taking up the value of final goods and services. तीन चीजें याद हो गई. Then I said FAM, so दो बार A है. एक A है that it includes the net income from abroad. It includes the net income from abroad. That is all goods and services which are available for the residents of a country. Right? So they may not be produced in this country, but they are available for the residents of this country. Right? That means I'm talking about exports and imports. तो जो export करते थे हम गुड तो हमारी कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है, एंड इम्पोर्ट जो हम अपनी कंट्री में मंगाते हैं. ठीक है. सो it includes net income from abroad. That is, it includes the net income from abroad. That is difference between exports and import. The value of exports minus the value of imports. So this is the next feature, and then we are taking up the net aggregate value of the goods. That is, we are not including depreciation. तो 3F हमको याद हो गए, 2A हमको याद हो गए. एक A का मतलब है we are taking up, we are also including the net income from abroad. That is export minus import. एक A का मतलब है we are taking up the aggregate value, right? That is, we are not including depreciation. Now what does M means? So 1M is that this is a macroeconomic concept. It's a macroeconomic concept. And the second M is that national income is always expressed in terms of money. So FAM, the moment you say features of national income में 3 बार F, 2 बार A, 2 बार M. एक M है, it is expressed in terms of money. एक है, this is a macro concept. एक A है income from abroad और एक है ये aggregate income. एक F is financial year, एक है flow concept, and the next F is that we are only taking up the value of goods and services of the final goods. Guys, once the features of national income are clear, let us understand certain concepts, that is circular flow of income. जहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि एग्जाम में कभी प्रोडक्ट फ्लो या मनी फ्लो के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये है क्या. सो लेट्स अंडरस्टैंड.
सो इसके 3 मॉडल्स हैं. वन इज नोन एज टू सेक्टर मॉडल, द अदर इज 3 सेक्टर मॉडल एंड द नेक्स्ट वन इज 4 सेक्टर मॉडल. तीनों मॉडल्स में फर्क क्या है? 2 सेक्टर मॉडल में हम सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म को ले रहे हैं. ठीक है, जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में लिया एक्स ए बी सी जो 3 जन थे, दे आर दी हाउस होल्ड, दे आर दी फर्म्स, और वो लोग जो अपने यहाँ पर वर्कर्स एम्प्लॉय कर रहे हैं या जिनसे जगह ले रहे हैं, दे आर दी हाउस होल्ड्स, राइट, ऑन अ सिंपल नोट. सो 2 सेक्टर मॉडल में दे जस्ट 2 पीपल, द पीपल, द हाउस होल्ड पीपल, मतलब लोग, कंट्री के लोग, और कंपनियां, फर्म जो बनाती, जो प्रोडक्शन करती. 3 सेक्टर मॉडल में हम इसमें गवर्नमेंट भी ऐड कर देंगे, और 4 सेक्टर मॉडल में हम गवर्नमेंट के साथ साथ जो हमको फॉरेन से इनकम है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसको भी ऐड कर देंगे. सो दीज आर दी 4 मॉडल्स, 3 मॉडल्स, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल. 2 सेक्टर में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म, 3 सेक्टर में गवर्नमेंट भी ऐड हो गई, 4 सेक्टर में आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी ऐड हो गया. Now what does this 2 sector model means? अच्छा, दूसरा याद करने के लिए, हमेशा इनकम इज डोनेटेड बाय वाई. वाई मतलब इनकम, सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट ऐड होगा तो उसका जी होगा, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा तो एक्स माइनस एम. एक्स मतलब एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के लिए एम. तो याद रहेगा, एम मतलब इंपोर्ट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट. ठीक है, G इज गवर्नमेंट, C इज कंजम्पशन, I इज इन्वेस्टमेंट एंड Y इज इनकम. ठीक है, तो 2 सेक्टर मॉडल में क्या होगा? इट विल बी इनकम इज इक्वल टू हाउस होल्ड. हाउस होल्ड क्या करता है? कंज्यूम करता है, तो कंजम्पशन, प्लस बिजनेस फर्म क्या करती है? पैसा इन्वेस्ट करती है, तो इन्वेस्टमेंट. सो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. 3 सेक्टर मॉडल में इसमें एक जन और ऐड हो गया, दैट इज गवर्नमेंट, G. और 4 सेक्टर मॉडल में इसके अंदर क्या ऐड हो गया? देयर इज गोइंग टू बी एन एडिशन ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. सो यहां तक सबको याद हो गया? 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल. नाउ गाइज, इस 2 सेक्टर मॉडल को हम समझते हैं. The upper part is talking about the factors of production and the second part is talking about your commodity market. You can put it like this. ध्यान से इस डायग्राम को आप देखिए. फर्म को गुड प्रोड्यूस करना है, राइट? अब ये जो फर्म गुड प्रोड्यूस कर रही है वो अल्टीमेटली कंज्यूम कौन करता है? हाउस होल्ड. ठीक है, फर्म को गुड प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? उसको लोग चाहिए जो काम करेंगे, उनको दे नीड प्लेस जहां पर वो प्रोडक्शन करेंगे, राइट? सो टेक्निकली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को चाहिए वो उसको कहां से मिलता है? हाउस होल्ड से मिलता है. लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया. द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग मनी इनटू द बिजनेस, राइट, द प्रमोटर इज ऑल्सो द पर्सन फ्रॉम द हाउस होल्ड, राइट? द पीपल हु आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, the labor, and of course the land is also owned by the household. So the factors of production which the firm needs comes from the household. इन factors of production को इस्तेमाल करके what is the firm doing? It is producing goods and services, right? They use the factors of production, produce goods and services. Now these goods and services which are being produced, they are ultimately being consumed by the household, because ये जो firm है, ये जो फैक्टर इनकम है, मतलब जिसने उनको जगह दी उसको रेंट पे करता है, जो लेबर है उसको वेजेस पे करता है, जो प्रमोटर है उसको वो प्रॉफिट पे करता है, या आप बोल सकते हो इंटरेस्ट पे करता है. सो द पेमेंट ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इन हाउस होल्ड्स के पास इनकम आती है. दे यूज दिस इनकम फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज. आई होप आई एम वेरी क्लियर. हाउस होल्ड को जो कंजम्पशन करना है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसके लिए जो इनकम है वो फर्म से ही आती है. फर्म जो गुड्स बनाता है उसके लिए जो उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए वो कहां से आता है? वो हाउस होल्ड से ही आता है. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस 2 सेक्टर फ्लो? एग्जाम में ना समझ में आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैम हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ मेरी बात ध्यान रखिए, सिर्फ मेरी बात आप ध्यान रखिए. यू विल बी एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम. मेरी क्या बात ध्यान रखिए आप, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं
उसको हाउस होल्ड बनाता है। तो एक तरफ पे लिखिए आप हाउस होल्ड और एक तरफ पे लिखिए फर्म, ठीक है। अभी ये फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, यस, द फर्म इज मेकिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, और ये गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेटली हाउस होल्ड के पास जा रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए। तो बेसिकली आप इस तरीके से समझो, household provides the land, labor and capital to the firm, and with that the firm produces these goods and services. Firm, for these land, labor, capital, the firm is paying these people income, rent, wages, right? They use this money for the purpose of buying these goods and services. So can you understand this two sector model? Once you understand this two sector model, you will be able to understand product flow and the money flow. Product flow का मतलब क्या है, goods flow from the household to the firm and back to the individual, right? मतलब goods flow from the household to the firms and from the firms back to the household. मतलब जब हम प्रोडक्ट के फ्लो की बात कर रहे हैं, टेक्निकली आप बोल सकते हो फर्म प्रोड्यूसेस द गुड्स, देन दोज गुड्स आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द फर्म। सो जो फर्म बनाता है वो हाउस होल्ड के पास आता है और वहां वापस से इट गोज बैक टू द फर्म ओनली। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दैट गुड्स फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म एंड देन बैक फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड. दिस इज नोन एज अ प्रोडक्ट फ्लो. Similarly, money flows from the firms to the household, right? And again from households to the firm. यहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्शन ध्यान देना है. मनी में मनी विल फ्लो फ्रॉम फर्म टू द हाउसहोल्ड. फर्म से हाउसहोल्ड को पैसे जाता है, उसी पैसे से public buys the goods. So money flows from firm to the household and then from the household to the firm back. This is known as money flow. Product flow में please remember household पहले आएगा. The product flows from household to the firm and then from the firm back to the household. Am I very sound and clear? Please remember this line. Product में it has to be household gives the factors of production to the firm and then firm produces goods and services and back to the household. So household to firm and then firm to household. This is known as product flow. Household से firm, firm से वापस household. Money flow में firm देता है पैसा household को. So आपकी अंग्रेजी कैसी होनी चाहिए? How do you start writing? That is the flow of money starts from the firm to the household in the form of rent, income, wages. So the flow of money comes from the firm to the household and then from the household back to the firm. This is known as product flow and money flow. So I hope by this time you are very clear with the two-sector model. And in this two-sector model, if we include the government, it becomes a three-sector model. And if we include the foreign sector also, then we are talking about the four-sector model. So we understand national income. We understand the features. FAM is the word. 3 बार F है, 2 बार A है, 2 बार M है. ठीक है? We understand the circular flow of money. Right? Circular flow of money आपको मैंने अभी समझा दिया. 2 sector, 3 sector, 4 sector. Now let us understand certain concepts. ये again exam में आता है. Give one economic concept. So let us understand. इन्होंने हमको 4 concepts दिए हुए हैं. Okay guys. So look at it. Different concepts of national income. First let us understand these 2 words. One is GDP and there is NDP. मतलब DD common है, मतलब we are talking about only the domestic product, right? This is the sum total of all goods and services which are available in a domestic territory. ठीक है? Okay. So it is consisting of G और N में दोनों में difference आपको क्या लग रहा है? Can you look at it? GDP is consumption, investment, government plus X minus M and NDP is consisting of GDP minus depreciation. इसका मतलब the difference between GDP and NDP is only one. Gross domestic product में we are taking up the gross value of goods and services which are available to the domestic territory of a country.
ठीक है, ग्रॉस वैल्यू मतलब depreciation is also a cost which must be included, right? So this is gross domestic product, GDP. And when I say NDP, that means usme se if I just subtract depreciation, it becomes net domestic product. So value of all goods and services, final goods and services which are available in the territorial boundaries of a country, net of depreciation will be net domestic product. ये बात बैठ गई? Now guys, gross national product. Now अगेन यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है और नेट नेशनल प्रोडक्ट है. सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंस विल ओनली बी ऑफ डेप्रिसिएशन. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. इसको सिंपल टर्म्स में आप समझ लीजिए, द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अर्नड बाय वेदर within the country or internationally by the residents of that country minus any kind of foreign payments outside. That will be gross national product. So technically what is the addition? यहाँ तक जब हम GDP की बात कर रहे थे तो it was consumption, investment, right? Look at it, it was consumption, investment, any earnings from the government plus net of exports and imports. So when I talk about gross national product, सब कुछ वही है. You're talking about consumption, investment, government, net of exports. But इसके अंदर एक चीज और क्या ऐड हो गया? Any kind of receipts from the country minus any payments outside the country. ठीक है? So gross national product is all the goods and services which are being produced in the country and outside the country minus any kind of net payments outside the country. And what will be NNP? That is net national product. The difference is only from GNP you subtract the depreciation. Am I clear? Guys, ये question number 5 में एक question भी आता है solve करने के लिए. That calculate the national income. We will be doing that and we'll be looking at the question also. But till then, if you have understood what national income is, we have understood what is national income, we have understood the features of national income, we have understood the 2-sector, 3-sector and 4-sector concept of national income, we understood the various definitions, gross domestic product, net domestic product, gross national income and net national income. So if you have followed anything from my session, then please do like my class and share it with your friends who are writing their board exams. And if you want to hear and want us to explain something more, please do comment and let us know. If you have still not subscribed to my channel, then please do. See you in my next class. Thank you.